Perfect. So we are live. Hi, everybody. We'll start the live in about a minute. We are just setting up and I'll turn on my video in about 30 seconds from now. Just sharing the link with friends and people we know and would ask you to do the same. Perfect. So we are live. Okay, I'm doing this Zoom thing after a very long time, so I'm just getting used to it again. But we are live on YouTube. My name is Ishan Sharma. Welcome to Karwaan after a very, very long time. Last time we had the Karwaan Distinguished Lecture, but the familiar background was not there. I was in Delhi at that time, but now I'm back. So let me also invite my team members and co-panelists in this Karwaan Baithak. First, I would like to ask Anurod to just turn on his camera. Anurod is the editor in Karwaan. He edits, he writes pieces on history for our Instagram uh, page. So Anurod, if you can turn on your camera. Second is somebody who has been my co-panelist in these Baithaks earlier also, Chandni from Chandigarh. So hi Chandni, welcome. Wait, I think I am pinned on YouTube, but now people I think can see us. We also have Shrishti Jain joining us from Noida. Shrishti is also part of the core team. So today you have almost all of the core team members. Only one person is missing from the core team, Vaishu. But if she is watching us right now, hi Vaishu. So she might join us maybe later in the stream. If you are watching Vaishu, the link is in the core team group that you can follow. I'll also share the YouTube. I'll share the Zoom link on the YouTube live also, so that people who are watching us, if they want to join us on the stream, they can do that. I think 4 people are watching right now. So hi to all those 4 people. Happy Holi to everybody. Those who are celebrating. Uh, Happy Holi Chandni, Shrishti, Anurod. I hope आप लोगों के यहाँ, I don't know if you all do that Holika Dahan thing. Uh, UP में it's a very popular festival. I don't know about various regions in India, but in our region it's very well celebrated. What about you, Shrishti, Chandni? I think Holi's become this pan-India festival now. So splashing of colors is something that happens everywhere. And I have come across those small bonfire sort of setup everywhere in Chandigarh. But I understand that Holi is, of course, much bigger festival. It belongs to Uttar Pradesh. So, of course, it's nothing in comparison to Uttar Pradesh. But it's a festival that is celebrated with a lot of gusto up north in Punjab. Shrishti? Yeah, am I audible? So, like Noida mein I didn't see people celebrating Holika Dahan as such, but in my hometown, like in Indore, Holika Dahan is one of the most prominent thing that we used to do. And during my school days and hostel days, I used to remember we have a whole big festival there, and we used to go there and celebrate. So it's a very big thing, and I agree with Chandni because there is nothing just like UP here, but yeah, it's a although I'm in UP, but I'm not seeing this thing in here like in Noida, but it's good. Tomorrow also happens to be Women's Day. And not, It was day before yesterday, I think. Yeah, it is on 8th को नहीं होता? No, Women's Day is on 8th. Yeah. 8th. अच्छा, 8th है, 9th है. No, it's 8th of March. I history students we need to be Sorry, I don't know. I'm every day is a Women's Day and a Men's Day. Every day, I agree. Every day is a day for everybody, not just men and women. I agree. And in fact, this is something that I was hoping in my mind that we could discuss today. Okay, we are a team which has almost equal number of male and female panelists, but the panelists are the members. But हमने कभी इस बारे में बात नहीं करी कि ये जानबूझ के किया है. We are totally talent oriented sort of yeah, that's true for our jury, our everything that we do. Exactly.
It's always in the it might be in the subconscious, but it's never in the conscious decisions. But we also have Anurodh joining us from Delhi, or I think Delhi, yeah, Aligarh, I don't know. Delhi. तो अनुरोध, आर यू उधर सेलिब्रेट हो रहा है आज? पीपल सेलिब्रेटिंग इन हाँ हाँ, चौराहे पे काफी सारी लकड़ियां लगा दी जाती हैं, एंड देन आज के दिन पूजा होगी, सो उससे पहले एंड देन फिर वो जला दी जाती है, एंड देन अगले दिन होली होती है. So this, I think everyone knows. So that's common knowledge. And it's But interesting. I don't think it's a common knowledge, because I don't know if people in the south celebrate it with the same gusto, or people in different regions. We are very Gangetic, plane centric people. So we think that whatever happens in our universe should be a common knowledge for everybody. तो वो बड़ी दिक्कत हो जाती है उसमें. लेकिन हम in my childhood, Holi was much popular than Diwali. Diwali is a pan-India festival. People celebrate Diwali everywhere. But Holi is very UP wala thing for us. उसमें वो गुजिया बनती है. गुजिया, we wait for गुजिया entire year. We wait के जब होली आएगी तभी गुजिया बनेगी. जैसे कि जब छठ आती है तो ठेकुआ बनता है. For people who are from Bihar and Eastern UP, they might know ठेकुआ and the relevance of ठेकुआ. और एक स्वीट डिश, एक डेलिकेसी कैसे एक फेस्टिवल को डिफाइन करती है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू थिंक के अगर वो क्या कहते खीर है या सेवई है तो कुछ ईद है, ईद से रिलेट कर दिया. सोन पापड़ी को हमने दिवाली से रिलेट कर दिया है क्योंकि सबके घर सोन पापड़ी आती है. इवन यू कैन रिलेट सोन पापड़ी शादी के लिए भी. जब भी शादी का इनविटेशन आता है तो उसके साथ एक बहुत सारा सोन पापड़ी का पैक आता है तो आपके घर पे, एंड यू गॉट वेरी एक्साइटेड उसको देख करके. नाउ वी हैव सो मेनी स्वीट्स. हमारे यहाँ शादी के बाद एक चीज होती, खाजा कहते हैं. आई डोंट नो व्हाट पीपल कॉल इट, बट शादी के बाद वो एक पूरा स्वीट बॉक्स आता है जिसमें काफी सारी मिठाइयाँ होती हैं. उसमें खस्ता कचौड़ी होती है, 3-4 तरह के लड्डू होते हैं. ब्यूटीफुल, वेरी डिलीशियस थिंग दैट वी ऑल लुक आफ्टर टू अ मैरिज, कि कुछ तो आएगा शादी के बाद घर पे. जैसे इंडो जिंगेटिक प्लेन में होली बहुत बड़ा फेस्टिवल है, वैसे लोहड़ी पंजाब में बहुत बड़ा फेस्टिवल है. एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी कम अक्रॉस every now and then when we celebrate Lodi, that because we celebrate it with a lot of gusto here. But I understand कि बाकी इंडिया में या जरा सा भी, मतलब यूपी में भी इतना बड़ा फेस्टिवल नहीं है शायद वो जितना बड़ा पंजाब में. जैसे तुम्हारे यहाँ पे गुजिया तो यहाँ पे भी मिलती है, बट हमारे यहाँ पे लोहड़ी के साथ इज रेवड़ीज, एंड देन आग जलानी ही जलानी है, चाहे छोटी हो या बड़ी. एंड एवरीबडी, यूजुअली इट्स अ कम्युनिटी फेस्टिवल, बट हमारे यहाँ पे लोहड़ी उतना बड़ा है जैसे तुम्हारे वहाँ पे होली. हमारे लोहड़ी ओनली दी पंजाबीज सेलिब्रेट लोहड़ी हमारे यहाँ. It's more like a agricultural fest to Festival, New Year, new cultivating season, और पता नहीं क्या क्या उससे रिलेट होता है. For Hinduism, I think it's Makar Sankranti, more or मकर less. संक्रांति. It has the same meaning. We call it the unofficial end of winter season, at least in North India. क्या बोलते हैं अब इसके बाद थोड़ी ठंड कम पड़ेगी नॉर्थ में, सो हमारे लिए वो अनऑफिशियल एंड ऑफ विंटर सीजन होता है. यहाँ पे होली है वो चीज, दी मार्कर कि होली के बाद गर्मियाँ शुरू होती हैं. And even you can relate with मकर संक्रांति. एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से तो मकर संक्रांति इज देयर कि जो पहला धान होता है वी सेलिब्रेट दैट. एंड आई गेस लोहड़ी का भी यही है ना कि पहला धान भी यू सेलिब्रेट एंड देन उसको ही आप जो आग में हो वो डालते हो. यस. तो ऐसे कुछ एमपी में भी है, तुम मध्य प्रदेश से हो सृष्टि, तुम्हारे वहाँ पे भी कोई ऐसा फेस्टिवल है जो सबसे ज्यादा तुम्हारे एरिया में बनाया जाता हो, शायद उतना बाकी इंडिया में ना हो? एग्रीकल्चर वाइज तो एज सच आई डोंट नो, बट यस जब लोहड़ी होती है तो हम लोहड़ी को यूज टू सेलिब्रेट, एंड वही वीट का जो पहला धान आता है तो पीपल यूज टू गिव दैट. तो हमने मतलब मैंने अपने स्कूल डेज में लाइक बिकॉज आई वाज इन हॉस्टल, तो जो भी सेलिब्रेशन होता था पीपल का कोई भी हो उसका डजंट इट मैटर कि किस ग्रुप का, भी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल. तो आई रिमेम्बर कि होलिका दहन भी होता था हमारे यहाँ पे एंड लोहड़ी पूजा भी होता था, तो हम वीट का जो है वो डालते थे, देन वी to eat it. तो वो एक हमारे लिए बहुत enjoyable moment होता था.
Nice. एक सवाल आया, आई थिंक ओनली चांदनी कैन आंसर इट। अभिनव खोकर का सवाल है, इजंट होला मोहल्ला सेलिब्रेटेड इन पंजाब विद कलर्स? इज देयर समथिंग कॉल्ड होला मोहल्ला? हाँ, सेलिब्रेट होता है होला मोहल्ला भी, बट ज्यादा बिकॉज आई एम इन चंडीगढ़ एंड होला मोहल्ला इज गॉट मोर टू डू विद इंटीरियर्स ऑफ पंजाब, बट हाँ सेलिब्रेट होता है हमारे यहाँ पे भी. यस. Okay, and 11 people are watching us, guys. You can always send messages in the chat, make live chat more lively. Send your if you also remember something from होली, क्योंकि हमारे तो पूरा बचपन होली के रिलेटेड बहुत सारी कहानियां हैं. The whole हिरण्यकश्यप, होलिका और प्रहलाद, this whole story is something that we all relate to, क्योंकि बचपन में वो कहानी आज के दिन सुनाई जाती थी. तो जो धान होती है, जो गेहूं का वो जो एक पूरा होता है धान, हम उसको ले जाते हैं और उसको होलिका में सेक्रीफाइस या उसको चढ़ाते हैं, एंड देन वी प्रे. इट्स अ वेरी इलेबोरेट थिंग. जैसे इट्स इन लोहरी, यू नो ऑफर इट टू द फायर, तो ऐसे ही इसमें भी है. और फिर घूमते हैं होलिका के अगल बगल. So it's a whole beautiful thing, cultural thing in our place. अभी बाहर हो भी रहा होगा. 8:30 I think is the time for Holika Dahan in my society. I don't know about others, but it's a beautiful festival. I don't like to play with colors because I am very allergic to colors. But होलिका दहन मजा आती है, उसके बाद खाने में मजा आती है, क्योंकि इस समय बड़ा अच्छा अच्छा बनता है. आप लोग बताइए, किसी के यहाँ नमक पारे या वो क्या कहते हैं, मठरी बोलते हैं मठरी? उसे यहाँ पर. मठरी बनती है. मठरी बनती है, गुल्फियां बनती हैं. लाइक गुल्फियां मठरी जैसे ही होता है, बट उसमें चाशनी भी डालते हैं, तो सूख जाती है. जो उसके शक्कर बाद पारे. आई डोंट नहीं, हाँ शायद हो शक्कर पारे. सकता है, आप वही कहते हो, लेकिन हम गुल्फियां बोलते हैं, गुजिया बोलते हैं. मतलब गुजिया तो एवरीवन नोस. गुल्फियां, मठरी एंड बेसन का भी बनता है. देस इतना बड़ा सिलेंड्रिकल का होता है, एंड देन वी पुट अ पेस्ट इन इट एंड वी रोटेट दैट हैंडल. तो उसके अंदर से लाइक जस्ट लाइक नूडल्स उस शेप में निकलता है, एंड देन उसको सेक के काइंड ऑफ नमकीन की तरह बन जाता है. तो वो भी है. तो काफी सारी डेलिकेसीज बनती हैं. अभी तो काफी टाइम हो गया नहीं बनी, बट या आई नो. एक मैंने फेस्टिवल मूवीज में देखा है, इट्स कॉल्ड लठमार. दिस दिस सॉन्ग विद अक्षय कुमार इन इट. इज दैट एक It's तरह की Latmar होली Holi. सेलिब्रेशन है. हाँ, अच्छा? वृंदावन में, मथुरा में, नॉट वृंदावन, मथुरा में मथुरा में. मनाया ओके. जाता है. वृंदावन में लड्डू मार होली है. ओके. लठमार होली लड्डुओं 2 से. बार होती है. मैं अच्छा. आई डोंट नो, लाइक एक पहले होती है दिन में. मतलब आई एम नॉट क्लियर अबाउट कैसे, मतलब किस दिन होती है, कहाँ पर होती है. माय दादी टोल्ड मी वंस. तो शी सेड कि 2 टाउन्स होते हैं. तो इस एक टाउन की औरतें दूसरे टाउन में जाती हैं, एंड दे लाइक लाठी मारती हैं मेन को. मतलब वैसे नहीं, बट स्टिल उस तरह से. तो एंड देन नेक्स्ट डे दूसरे टाउन की वुमेन यहाँ यहाँ के मैन को लाठी मारती, लाइक शील्ड कर लेते हैं. दैट्स काइंड ऑफ प्ले, बट स्टिल वो इसका कोई सिग्निफिकेंस है, कल्चरल सिग्निफिकेंस या बिल्कुल मिथोलॉजी? होगा, हमें पता इसका नहीं होगा है. बट हमें पता नहीं. तुम्हारे यहाँ पे मनाते हैं It's कानपुर interesting. में? नहीं नहीं, ये सिर्फ Okay. वृंदावन, मथुरा, ब्रज एरिया में मनाई जाती है. इसका समथिंग टू डू विद राधा एंड कृष्ण. And समथिंग एक समथिंग जस्ट टू डू लेके कहते हैं, यू नो अबाउट वाटर बलून्स राइट. तो यहाँ पे शायद मथुरा वृंदावन में उसी साइड पर लाख के अंदर कलर्स भरते हैं, गुलाल भरते हैं. लाइक लाख तो जब मारते हैं किसी को टूट जाता है जल्दी, हर्ट इट डजंट हर्ट, लेकिन वो कलर पे फैल जाता है. तो वो भी चीज आ जाती है. तो वो भी इंटरेस्टिंग है. लाइक हम बैलून से इतना ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि उस चीज को भूल गए. True. बट नाइस. इट्स इंटरेस्टिंग. हाँ हाँ, वी कैन से कि कुछ कुछ हेरिटेज के ऐसे एलिमेंट्स होते हैं दैट वी आर फॉरगेटिंग एंड वी रियली डोंट नो. लाइक अगर हमें कोई जो ओल्ड स्टोरीज हैं, इफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स हमें बता रहे तो वी नो, पर अदरवाइज दे आर गोन, हमें बिल्कुल भी नहीं पता रहता है. आई यूज टू रिमेम्बर, मुझे बस लाइट मार्क, आई डोंट नो एनी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, बट आई रेड अ मीम और दे वर लाइक कि उस दिन विमेंस को फुल लिबर्टी होती है कि दे कैन बीट देयर हस्बैंड, जितना फ्रस्ट्रेशन ही निकाल दो.
हाँ, वो ऐसे मैंने भी जोक तो सुना है, लेकिन मैं कभी देख नहीं पाया। विश टू विटनेस वृंदावन और मथुरा की होली, क्योंकि वो बहुत वो हफ्ते भर चलती है। वो इतना एक दो दिन के नहीं होता, हफ्ते भर होती है। मैंने जयपुर की होली देखी थी पिछले साल, थैंक्स टू विलियम एंड हिज टीम एट JLF, हु अरेंज्ड JLF इन मार्च, लास्ट टू लास्ट ईयर। तो नहीं, लास्ट ईयर इट वाज इन मार्च। तो उस समय सिटी पैलेस में वहाँ पे बहुत शानदार सेलिब्रेशन होता है। वहाँ पे एक कोई मंदिर है, जो उनकी डेटी हैं, जो रॉयल फैमिली की डेटी है, उनका मंदिर है। वहाँ पे फूलों से होली खेलते हैं। तो कलर्स तो बहुत आर्टिफिशियल चीज है मेरे हिसाब से। हिस्टोरिकली तो इफ यू सी, आई थिंक कलर्स की जगह ये फूल से ही खेलते रहे होंगे। I don't know. Who are historians? People can always correct us, write it in the Yeah. comments. लेकिन But हाँ, अगर we see the references of some of the paintings, like मैं कुछ टाइम पहले अभी देख रही थी, तो आई हैव सीन कि पेंटिंग्स में कलर्स हैं, दे आर शोइंग अस कलर। और इवन पिचकारी का भी बहुत है, दे हैव दिस बहुत लंबी लंबी गोल्डन कलर का पिचकारी, बिकॉज गोल्डन तो प्रोमिनेंट कलर्स होता है पेंटिंग में। तो बट स्टिल पेंटिंग्स में भी वी कैन सी द कलर्स के पीपल यूज्ड कलर्स। बाकी फूल इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर कि फ्लावर्स भी यूज होते हैं। मथुरा एंड वृंदावन में भी एक फूलों वाली होली होती है, आई गेस 2 मार्च को था फूलों वाली होली, जहाँ पर सबने फूलों के साथ होली खेला था। एंड इको फ्रेंडली भी बहुत है, तो इट्स गुड। बिल्कुल। आजकल वो चाइनीज रंग आते हैं, उसे ऑर्गेनिक करके बेचते हैं लोग बाग। बट हमारे पेंटिंग में तो हमेशा से ऑर्गेनिक ही कलर्स इस्तेमाल भी होते थे, पेंटिंग के लिए भी। तो बड़ा अच्छा है। लेकिन आई थिंक इनफ ऑफ होली डिस्कशन, क्योंकि मुझे भी अब गुजिया खाने का मन कर रहा है। लेकिन अभी इसके पहले वर्ल्ड बुक फेयर भी खत्म हुआ। आई वॉज इन दिल्ली फॉर द वर्ल्ड बुक फेयर। बड़े समय से मैं वेट कर रहा था कि कुछ किताबें आए। अनुरोध तो गया था, मेरे साथ ही गया था अनुरोध बुक फेयर, तो हाँ आई नो कभी अबाउट हिम। भी। बट सृष्टि चांदनी डिडंट गो टू बुक फेयर। सृष्टि, डिड यू गो टू द बुक फेयर? अनफॉर्चुनेटली मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया, तो आई मिस दिस चांस दिस ईयर। अच्छा, हम तो बट बहुत सारी बुक्स लेके आए। अनुरोध आई थिंक गॉट 8 बुक्स और समथिंग। 8 9, हाँ कभी रखी हुई है वहीं पर आई लैब। गेस दिस ईयर मेरे पास इतना बुक्स हो गया था कि आई एम लाइक कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंट्रोल माई सेल्फ नॉट टू परचेज एनी बुक्स। और टाइम भी नहीं मिला, आई somehow lost the chance, yeah. मैं तो बहुत बुक्स लाया। आई थिंक आई गॉट 10 10 11 बुक्स उस उधर से। और बैग भर गया था, आई हैड टू कैरी अनदर बैग, क्योंकि एक बैग में आया ही नहीं। कुछ And to बुक्स compensate for it, I bought books on Amazon because I couldn't go to the book fair. So yeah, I bought or did some online book shopping just to कौन से बुक्स compensate for हैं? that. शो द बुक्स। नाउ Uh, इट्स टाइम टू शो द बुक्स। the आई ones that लव we're reading or the ones that we bought? द वंस वी गॉट फ्रॉम द बुक स्टोर और फ्रॉम Amazon। Okay. रीडिंग तो मैं तो अभी कुछ भी नहीं पढ़ा। आई एम रीडिंग अ बुक, वेरी वेरी theoretical book, a manual of historical research methodology by श्रीधरन, जिनकी हम हिस्टोरियोग्राफी की बुक पढ़ते हैं। Yes. तो आई एम रीडिंग दिस वेरी बोरिंग बुक। if Sridharan Saab is watching, sorry, but historical theoretical books are always very boring and very time consuming. But I can show I'm reading very interesting book. This is the book Kalyanam. It's basically on about Indian paintings, Jain manuscripts, and this book tracks Jain manuscripts very well because from the very beginning, Dr. Pavan Jain is the writer of this book, and she talked about Jain, like what is Jainism, how these Jainism divided into two sects, and what are these two sects. Because most of the time, people really don't know about Jainism is basically divided into two sects, but why? This is the very big question mark that we encountered some most of the time. So she very nicely she talked about that, and then she comes into the Jain manuscripts, and she very nicely talked about how Jain manuscripts is a very good example to track the textiles of that time, because in these paintings they used like जो textiles में छोटे छोटे elements होते details होते उस पर हम differentiate करते कि this is the ikat and this is the
ikat wala textile and booty and work, and so very nicely she talked about that. And then about the paintings, like recently on Karwaan I wrote an article on 14 dreams of Queen Tirishla, and this book is also one of my reference. And in this book she very nicely she talked about 14 dreams, what are the significance of all these 14 dreams that mother before the birth of Tirthankara, she saw these dreams. And then she talked about all the elements of the life of Tirthankaras, which is illustrated through the mediums of painting. So it's a very good book. I'm very enjoying this one. ये whole this thing of dream बड़ा interesting है, क्योंकि बुद्धिज्म में भी dream का Maya's dream is very an important this thing. Yeah. जैनिज्म में भी, और ये सिर्फ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में ही मुझे दिखता है, क्योंकि हिंदुइज्म में there is nothing about No, there is nothing. And the most important things when I was reading like I'm Jain and I'm from Digambar sect, so I used to remember we have 16 dreams. तो हमारे यहाँ पे जब भी पंचकल्याणक होते हैं तो 16 dreams is a very prominent thing. मतलब वो पूरा celebrate होता है, and being a girl हम कुछ 56 कुमारी जिनको बोलते हैं वो बनते हैं, and we bring so many gifts mother के लिए, because अब वो pregnant है तो we got so many. तो फिर मैं बहुत ज्यादा सोच में पड़ गई जब आई वाज सर्चिंग फॉर माय आर्टिकल कि 16 ड्रीम्स आई हर्ड, देन 14 ड्रीम्स व्हाई, देन आई रीडिंग एंड रिसर्चिंग के बाद आई गॉट टू नो कि in Swetambar sects, mother used to have this 14 dreams, and in Digambars they had 16 dreams. So this is actually also a big difference that we can see. So yeah, so it's good. And all the elements, all the whatever ये कुछ objects जो हैं वो देखती हैं dreams में, and every object is related to the lives of तीर्थंकरस की. अगर कलश देख रही हैं तो तीर्थंकर has that this prosperity and purity, जो कलश में है वो एक तीर्थंकर के गुण में होगी, उनका nature वैसे होगा. तो these are the things. very interesting. चांदनी शायद कुछ कह रही थी. Yes, this is again something that brings me to discussion कि last time जब मैंने और ईशान ने discussion करी थी, we were undergraduate students or people who had just finished our undergraduation, and now all of us are into our masters, and not for some there is a change of city, and for some there is an extreme specialization of subject. जैसे कि सृष्टि का मतलब over time मेरे को दिखा है कि बहुत इंटरेस्टेड थी वो आर्ट हिस्ट्री में, और अब उसका देखने का नजरिया विद इन couple of months और भी ज्यादा माइन्यूट हो गया. So this is again something that we can discuss later about life after BA या life as an MS student. But now coming back to the topic that we were discussing, the book that I am reading right now, super interesting book. It's The Lotus and the Lion, which is a collection of essays by the one and only Richard Eaton, Professor Richard Eaton. And इनसे पहली बारी बात करने का मौका मुझे कारवां पे मिला था. And I think that got me interested into the work that Sir was doing. An excellent book. He's talking about this often contested division of our history according to religion, and he's giving his own theory that religion के basis पे इंडिया की history को divide नहीं करना चाहिए. It should be on the basis of Sanskrit cosmopolis and Persian cosmopolis, and it's a very detailed and minute and a compelling argument that he's given throughout the book. So this is the book that I'm currently reading. I think Anurodh was looking for that book. Online मिल जाएगी. नहीं, हम कहीं बुक स्टोर पे थे और हमने पूछा था, we couldn't find that book. बुक फेयर में पूछा था, किसी कहीं तो पूछा था, मैं भूल गया. ऑनलाइन थी. हाँ, but it's a wonderful book. Professor Eaton is one of the most brilliant scholars. I agree, undoubtedly. अनुरोध क्या पढ़ रहा है? मैंने अभी रिसेंटली बुक ली थी ये वाली, Very Short Introduction of Empire. So I just wanted to know what empire means and उसके पीछे क्या reasons हैं. There are no reasons, मतलब it is काफी etymology के बारे में बात करते हैं, empires के बारे में, empire and what is imperialism and what is colonialism. तो एक तरह से modern history का background इसमें मिल जाता है, मतलब जैसा मेरा specialization है. So I had to read it, and then he talks about 2-3 things like empire by sea, empire by land. Empire by sea is kind of quite modern, मतलब after 1500 Portuguese के आने के बाद जब से voyage adventures ये सब शुरू हुए, उसके बाद से empire by sea was it became larger. जैसे इंडिया भी Britishers came by the sea, and they came from the eastern side of India, not the western, जैसे कि land area था. तो it's
it's good. And another book that I didn't buy from book fair, but it I bought early on. It's Tirukural and translated by Gopal Krishna Gandhi. This one. So it is तिरुवल्लुवर ने लिखी है, ये तमिल में लिखी है. And then this makes me, मतलब इसमें काफी इस छोटे वर्सेस हैं, and it makes me wonder कि I should learn तमिल, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक, मतलब ट्रांसलेशन का चाहे कितना भी अच्छा हो, it still doesn't give you that vibe, I would say. तो वो चीज लैक कर जाती है. So that prompts me to learn another language, especially Tamil, South Indian languages. So that would be my language if I would like to learn. So यही books लाया था मैं. That's interesting. And एक और book भी है, like it's Oxford Mini History of Britain. हमें इंडिया की तो पढ़ाई जाती है, लेकिन ब्रिटेन की नहीं पता हमें क्या हो रहा था क्या नहीं. So that's fifth volume after 1841 to 1900s, I think. So ब्रिटेन के बारे में जानेंगे उसके पहले, फिर पता चलेगा उसका बैकग्राउंड क्या था, बाकी डिसीजंस जो ली ब्रिटेन में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में. तो क्या, सो व्हाट आर यू रीडिंग नाउ, ईशान? मैं वही सोचा, तुमने अभी मुझे याद दिला दिया. एक किताब है मेरे पास, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इन 100 एक्ट्स, या पता नहीं क्या है वो किताब का नाम, ढूंढनी पड़ेगी, कहीं तो रखी है. द ब्रिटिश एम्पायर इन 100 फैक्ट्स, ये किताब ये लिखी है जेम डुडुको ने, और वो बहुत अच्छी किताब है. मैं बुक फेयर से बहुत सारी बुक्स लाया, गॉट मेनी बुक्स फ्रॉम द बुक फेयर, बट आई थिंक द मोस्ट पॉपुलर बुक इन द बुक फेयर, बिकॉज 10 of my Facebook friends also got the same book. It went out of stock in the book fair. It's called Print and Pleasure, Popular Literature and Entertaining Fictions in Colonial North India, Francesca Orsini. ये book I think is the most sought after book at the book fair this time. It's a brilliant work. और उसके अलावा एक किताब थी जो कि बड़े समय से out of stock थी, and 3 ऐसे collective has got this book out. Light of Universe, Essays on Hindustani Film Music by Ashraf Aziz. ये बहुत समय से मैं खोज रहा था ये किताब, ये कभी नहीं मिलती थी. फाइनली आई गॉट अ कॉपी. और फाइनली तुमने एम्पायर बोला, सो अभी मैंने ये किताब मंगाई, ये कल्चर अ न्यू वर्ल्ड हिस्ट्री. तो ये कल्चर्स कैसे डेवलप हुए और एक कल्चर ने दूसरे कल्चर को कैसे इन्फ्लुएंस किया, इन सब की ये बातें हैं. कि ग्लोबल सिविलाइजेशन, जैसे हम कहते हैं कि हमारा कल्चर बहुत हम करते हैं, बड़ा हम उस पर गर्व करते हैं, संस्कृति. लेकिन कोई भी संस्कृति ओरिजिनल नहीं है इन इटसेल्फ. इट बोरोज फ्रॉम अदर सिविलाइजेशन, और कहीं लैंड भी करता है, किसी और को कुछ सिखाता भी है. तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग एंड ऐसा. तो ये इस किताब में मुझे ऐसा लगता है इसमें होगा, क्योंकि बैक कवर पे यही लिखा है, पढ़नी है. बट इट्स अ वैलिड आर्ग्यूमेंट कि कोई भी. और इसमें एक अशोक के ऊपर भी एक चैप्टर है. उस चैप्टर में किंग अशोक सेंड्स अ मैसेज टू द फ्यूचर. सो एक चैप्टर अशोक पर भी है, इंडियन सिविलाइजेशन पर भी एक चैप्टर है. और अभी फाइनली मैंने ये बुक ले ली जो मुझे फर्स्ट ईयर में ले लेनी चाहिए थी, अर्ली इंडिया बाय डी.एन. झा, अ कंसाइज हिस्ट्री. ये बहुत अच्छी बुक है. ये मैंने फर्स्ट ईयर में, ये दिस वाज द फर्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री दैट आई कंप्लीटेड, एंड एक्सीलेंट आर्गुमेंट्स, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, एग्जाम्स में भी बहुत काम आती है. हाँ, और एग्जाम का तो पता नहीं, बट क्योंकि अभी तो आई एम इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जैसे चांदनी ने बोला, वी हैव चोजन आवर स्पेशलाइजेशंस नाउ. लेकिन अभी मैं बहुत सारे एंशिएंट एंड माइथोलॉजी पढ़ रहा हूँ. जैसे ये माइथोलॉजिकल बुक है, वेंडी डॉनिगर्स आफ्टर द वॉर, द लास्ट बुक्स ऑफ द महाभारत. और अभी उत्तरा रामायण भी मैं लाया, उत्तरा बाय अर्श्य सत्तार. देन रामचरितमानस की एक बुक मैंने अभी ली है, which is a companion to Ramcharitmanas by Rupert Snell and Neha Tiwari. It's a brilliant work because I am writing a paper on Ramcharitmanas and Tulsi's Avadhi. So these are some of the reference books that I'm using.
Then of course, Sudhanva Deshpande's Theatre of the Street, the Jan Natya Manch Experience. ये भी अच्छी किताब है for people who are interested in theatre, who are interested in the life of Sardar Hashmi. तो वो बड़ी अच्छी किताब है. तो ये सारी किताबें पढ़ रहे हैं हम. लेकिन अगर जो लोग हमें सुन रहे हैं, if they wish to also send their recommendations, suggestions, always feel free to send it in the live chat. मैंने एक चीज और करी है इस बार. Now that we're talking about books, that usually I was into buying academic scholarships till now, but now I also bought a popular history book, which of course means that I'm talking about William Dalrymple. So I've read 2 books by him till now, White Mughals and The Last Mughal. And इस book की मैंने बहुत तारीफ सुनी थी. So किसी ने पढ़ी भी है City of Jinns? मैंने शुरू की थी, but I couldn't complete the book because time नहीं मिला. But it's a brilliant book. William writes really good books, and he's one of the most popular historians, one of the top bestsellers in the world, the most known Indian historian maybe. So he's a brilliant person to read. मैंने जो ये किताब ली थी वो मैंने कनॉट प्लेस से ली थी 100 रुपए की. जो पायरेटेड कॉपीज होती हैं, जो बड़ी पॉपुलर हैं दिल्ली में. आई थिंक half of Delhi readers read pirated copies only. They don't get original copies because these are so readily available. So I remember बहुत काम हुआ हुआ है ना. जैसे there is Giles Tillotson's Delhi Darshan. Then we have Swapna Little Ma'am's work on this. So of you people, मतलब Anurodh is based in Delhi and Ishan frequents Delhi a lot. So तुम्हारे हिसाब से all the books that are available on Delhi, which is the most authentic book if you want to navigate through Delhi की गलियां and understand अंदर वाली history? If you had to name one. For somebody who does not go to Delhi as much as all of you do, which book should I pick up? Let me get a book. नाम बता दो जब तक ढूंढ रहे हो. Lucy Peck, Delhi Intech publication, 1,000 Years of Building. It has got a map also. इनकी फतेहपुर सीकरी पढ़ी है मैंने. वो बहुत अच्छी थी. इसमें सब कुछ है. You get everything. Those who wish to get a informed guide to Delhi, ये किताब आप लोग ले लीजिए. And there is another book, अभी मुझे दिख नहीं रही है, मेरे पास है, Delhi in 10 Walks by Swapna Little. तो वो भी बहुत अच्छी है. उसमें 10 हेरिटेज वॉक्स हैं दिल्ली की, जो आप लोग देख सकते हैं. और जो दिल्ली घूमने आ रहे हैं, पहली बात तो इफ यू आर कमिंग टू दिल्ली, ऑलवेज चेक फॉर अ कारवान हेरिटेज वॉक. वी यूजुअली हैव दोस एवरी वीक. तो the first thing that you should check is a Karwaan heritage walk. अगर नहीं हो रही बाई चांस, गर्मी ज्यादा है, हम म्यूजियम वॉक करते हैं. So people can join us on our museum walks. And we are doing a museum walk with Uma Chakravarti also. For the first time, Professor Chakravarti has agreed to lead a walk, public walk. And we have, I think, only five or 4 seats to go. It's about to be sold out. So इसके अलावा ये लूसी पैक की book, please do read Dr. Lucy Peck's work. It's a brilliant work. And I think a good plug-in here would be of many of the authors that we mentioned today, be it William Dalrymple, be it Wendy Doniger, be it Richard Eaton. We've hosted them on Karwaan. You can find their links to their lectures on our YouTube channel. So yes, we have hosted most of them on Karwaan, where they're talking about their scholarship on our channel. So even we can read Eva Koch as well for the architecture perspective. Like she covered Mughal architecture very well, so you can got to know about कि Delhi में जो Mughal architecture, it's so famous. So you can read her like Eva Koch. Professor Koch को भी हम host कर चुके हैं Karwaan. Yeah, we did. Even before reading about Delhi, like before reading about like Mughal architecture, and I was listening Karwaan lecture on Qutub. She delivered a very good lecture on Qutub in Karwaan, so I was listening. So yeah, Catherine Asher's Catherine Asher's for Qutub and Eva Koch, but we also hosted. Eva Koch is in Delhi these days. She delivered a lecture also last evening at IIC on the Planetary King
Humayun Padsha. I got that book. बहुत अच्छी book है वो. I've read a chapter from that book. बहुत अच्छी book है वो. It's time that we host Professor Koch again, and I'll request Definitely. Professor Koch if she can deliver an online lecture for all of us and those who are watching us right now. So in interest of all of us, we'll try to organize something. But we are coming back with our Karwaan Baithaks with scholars, not us, but with scholars in Delhi. And we are going to start our Baithaks in Bombay, in Mumbai. So we are coming to Mumbai next month. At Hotel Vasant. I don't remember the place's name. It's a 100-year-old, almost 75-year-old building. It was built in on 12th of August 1947, just before independence. So we are hosting our first Baithak there, and I think there's one more place there where we are also hosting. We are just waiting for the confirmation. Then we'll make an official announcement. We are also planning to go to Kolkata by September or October this year. So people in Calcutta, if you wish to host Karwaan Baithaks, please reach out to us on email, because we are planning to expand to different cities, not just in Delhi, because all of you can't come to Delhi for all of our events. So we'll come to your city and organize events for you there. So it's easier for us and easier for you. We only need your support and collaborations, sponsorships, if possible, to host us. You can offer your houses to let us stay for a few days in those cities. But yeah, चांदनी ने अच्छा सवाल उठाया था कि लाइफ आफ्टर बीए, हाउ इज योर लाइफ आफ्टर बीए, ये सवाल आज हम पूछते हैं. चांदनी, लेट्स स्टार्ट विद यू एंड देन सृष्टि, अनुरोध. I think this is one thing that is common after 10th and after 12th. You think that after you get into that area, जैसे 10th के बाद सोचते क्या करेंगे, 12th है, 12th के बाद चलो ग्रेजुएशन में घुस गए, ग्रेजुएशन के बाद सोचते पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद there's this big question of what you're going to do. And you, in my class, whilst we study, I'm into medieval India, so whilst we study medieval India in great detail, there's also this looming question of what you want to do आगे, because now you can't keep procrastinating के देखी जाएगी आगे एक और डिग्री है. Now you need to be careful. So people who are giving civil service exams, they're already in full-fledged tayari kar rahe. People who want to get into research, we have research programs. So this is one big difference. Now you don't have an option of procrastinating once you get into post-graduation. You have to be fully committed to your subject. You have to have this sort of this push in you कि extra पढ़ना है. Go beyond what is being taught in the classroom, because now homework या assignment से नहीं चलेगा. So that is one big difference. You need to grow up when you get into post-graduation. That is one thing I noticed. मैं same शहर में हूँ. I think सृष्टि भी same शहर में है. For Ishan and Anurod, there's also change of city. So how are you balancing both the things? तो तुम इस बारे में भी जरूर बताना viewers को. Balancing cities and pressures of future. Yeah. वो तो हम अपने जब हमारा मौका है तब हम जरूर बोलेंगे. सृष्टि, how is your experience, MA? So basically, my experience of MA was quite good. Like it is because BA जो था वो इतना लॉकडाउन में निकला है. Like you have this online classes, online assignments, so you really don't feel like to study. Especially with me, like online इतना frustrated हो चुकी थी कि मुझे लगता था like I really don't want to study at this point, because the whole day आपका classes is going on. But MA में the first privilege that I'm feeling is offline classes, because being in a class, seeing teacher in front of you is reading is very different, because लैपटॉप का स्क्रीनिंग देखना एंड सुनना वो एक बहुत चिक 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 लगता था मुझे. तो ये चीज आई एम एंजॉइंग. एंड देन द सेकंड थिंग आई एम सीइंग अ वेरी बिग डिफरेंस इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिसर्च, बिकॉज जब आप ग्रेजुएशन में होते हो तो वी स्टडी, हम बहुत सारे सोर्सेज देखते हैं, बट हम उनको इतने अच्छे तरीके से नहीं देखते हैं. बट मास्टर्स में यू लुक इनटू सो मेनी सोर्सेज एज वेल. आपको एक आइडिया होता है कि एक रिसर्च होती है तो कैसे होती है. इफ यू आर डूइंग स्मॉल थिंग्स तो आपको प्लेगरिज्म का भी ध्यान रखना है. आपको देखना भी कि अगर आप किसी का कुछ लिख रहे हो तो उनको कोट करना, उनको प्रॉपर वैलिडेशन देना कितना इंपॉर्टेंट होता है. फील्ड रिसर्च, फील्ड वर्क्स यू आर डूइंग,
if I could talk, like taking my example, like I'm doing art history. So for me, there is a big change because मैं मेरा एज चांदनी मेंशन अर्लियर ऑलवेज कि अब मेरा पेंटिंग्स को देखने का तरीका इज क्वाइट डिफरेंट बिकॉज आई एम सीइंग इट एंड पेंटिंग्स नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एस्थेटिक एंड आर्ट बट उनके पीछे एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी होता है, कल्चरल सिग्निफिकेंस भी होता है दैट यू आर ऑल्सो सीइंग. तो आर्ट इज दिस थिंग दैट somehow is very connected with our life क्योंकि हमारे लाइफ के बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके आर्ट से कनेक्टेड होते हैं. तो दैट आई एम ऑल्सो एंजॉइंग एंड इट्स फॉर मी इट्स अ थ्योरिकल सब्जेक्ट, थ्योरी भी है बट प्रैक्टिकल भी बहुत है बिकॉज एवरीथिंग यू आर सीइंग एंड वी आर डूइंग एज वेल बिकॉज लाइक लास्ट वीक भी है प्रिंट मेकिंग वर्कशॉप. तो इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस बिकॉज प्रिंट मेकिंग का आप जितना पढ़ रहे हो एंड आप यू आर डूइंग सो यू कैन सी लाइक हैंड इन हैंड जो आपको एक मिलता है दैट इज वेरी गुड. सो इस वो ऑफलाइन क्लासेस लाइक ऑनलाइन क्लासेस से ऑफलाइन वाला जो मेरे टाइम पीरियड था टाइम एंजॉय ये मेरे लिए बहुत अच्छा है. So it's a very good experience. क्या बात अनुरोध. अनम्यूट करना पड़ेगा तुम्हें, अनम्यूट. अब सही है. हाँ. सो जस्ट लाइक चांदनी साइड वो तो बात सच है बिल्कुल कि हम अब उस कल्मिनेशन पे कि हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि आगे क्या करना है. अनुरोध की आवाज नहीं आ रही. उसका इंटरनेट कट हो. We'll just wait for him. But हाँ, I think MA is more time consuming than BA. इसमें समय ज्यादा पता नहीं चल रहा है कि कहाँ जा रहा है पूरा दिन. क्लासेस तो बहुत कम होती हैं, क्लासेस तो एक होती है या 2 होती हैं दिन में, बट उसके अलावा इतना असाइनमेंट होते हैं. अनुरोध की बीच बीच में आवाज आती है, ब्लिंकर्स ऑफ वॉइसेस होती है अनुरोध की. तुम क्या बोल रहे थे अनुरोध? कोई नहीं, अनुरोध का शायद इंटरनेट का कुछ इशू है. लेकिन मैं वो बोल रहा था कि बहुत बिजी हो चुके हैं एमए में, एंड that's one of the reasons why our Karwaan Baithaks, our Karwaan lectures are very irregular. We are unable to host because we really don't get time from assignments. I'm currently trying to finish a book project, and then I'm trying to work on a paper, and then master's ka internal examination, then external examination, then खुद का travel plans to go to Pune or to go to उदयपुर. मतलब उदयपुर का तो मैं इतने दिन से टाल रहा हूँ, मुझे जाना है 2 दिन के लिए. It's only about 4 hours journey from Baroda to Udaipur. Can you hear me now? I think I lost my connection. So another thing is जैसे सृष्टि ने बोला कि हमारे स्कोप रिसर्च स्कोप बढ़ गया नाउ, एंड चांदनी ने भी ये चीज रिपीट की थी कि वी हैव टू गो बियॉन्ड आवर स्टडीज व्हाट हैज बीन टॉट. वी हैव टू स्टडी फॉर आवरसेल्व्स नाउ. लाइक हमें खुद रिसर्च करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा. एंड वन थिंग आई हैव लर्नड, आई एम स्टिल लर्निंग कि हाउ टू मैनेज विद टीचर्स, स्टडी विद टीचर्स. हर एक टीचर अलग अलग तरह से पढ़ाता है, एंड हाउ वी हैव टू accommodate their material with our own research of the subject. तो मतलब मेरे भी कुछ टीचर्स हैं जो काफी हाइडली बताते हैं, एंड कुछ टीचर्स हैं points but they are best points and we have to research those points. उस तरह हमें मैनेज करना पड़ेगा कैसे करना. So I have learned that now, still learning. तो वो चीज काफी सीखे. एंड थर्ड इज आज जैसे चांदनी ने क्वेश्चन पूछा था चेंज इन सिटी. Yeah, it's been different, but it's still not so different because very Delhi, it's not so far away from Delhi, but still I crave for Delhi because Delhi में घूमने की जगह बहुत ज्यादा है. So we एक चीज लॉकडाउन में we lost ईशान and me, I think 1.5 साल के आसपास we lost 1.5 साल क्योंकि सब लॉकडाउन में गया था. So उस 1.5 साल में I think we learned a lot about research, how to do research online. There are lots of resources online, we can search ourselves. हम खुद की रिसर्च कर सकते हैं. That's a good thing. तो वो हमने सीख लिया है, and that's benefiting us in our MA masters. That's a good thing, I think. So
let's see what happens now. You will you will get to know. सही बात है, सही बात है। कोविड ने हमें सब कुछ तो बहुत सिखाया, और हमने कारवान भी तभी शुरू किया था और अभी तक चल रहा है, और शायद काफी समय तक चलता रहेगा, इफ all of you keep supporting us and keep pushing us to do more and more sessions, Baithaks, things like that. लेकिन अगला जो आज हमने टॉपिक सोचा था बात करने के लिए, वो है नेटफ्लिक्स पर एक बहुत अच्छी डॉक्यू सीरीज आई थी, जो मैंने जब आई थी तभी देख ली थी, क्योंकि माय एरिया ऑफ रिसर्च रिलेट्स टू सिनेमा, और उसके ऊपर जो भी कुछ आती है किताब या कुछ डॉक्यूमेंट्री, तो वो जरूर मैं देखता हूँ। फिल्में चाहे देखूं ना देखूं, बिकॉज आजकल की फिल्में तो I think everybody know, they understand it is probably the worst time of Indian cinema, when you do not have anything original coming up. It's all jingoism and things like that coming up as cinema, and they're getting more popular than good cinema of some older times. So because it's the jingoistic era. Nonetheless, there's a docu-series called Romantics, The Romantics, on the life and legacy of Yash Raj Productions. Not Yash Raj as a person, Yash Chopra ji nahi, but the whole production house that he set up. और उनकी चांदनी और शोले फिल्मों से लेकर जब तक है जान, और उसके बाद भी जो उनकी अभी जो फ्लॉप्स आ रही हैं एक के बाद एक, यशराज की इट्स इन इट्स डिक्लाइन, यशराज प्रोडक्शन। लेकिन फिर भी क्या लेगेसी है उस प्रोडक्शन हाउस की, which defined the 90s romantic films for the whole generation, with शाहरुख खान को पॉपुलर करने का whole credit goes to Yash Raj and Yash Chopra. He made Shahrukh Khan the person, the star that Shahrukh Khan is today. Also Shahrukh Khan's own mehnat is also there, but he gave him opportunity to perform what he liked, and he made that सारे ना केवल लड़कियों के बट सभी के फेवरेट शाहरुख खान हो गए। वी ऑल really find Shahrukh Khan very hot and very charming, even at 55. I think he's 56, 57 now, but still he's much healthier, much fitter than me. I mean, I'm 22, 30 years younger to Shahrukh Khan, but still he's Shahrukh Khan. तो how did you find? किसी ने देखी इधर? चांदनी ने देखी है, I know, but सृष्टि, अनुरोध? I'm not, no. So I'll just take Chandni's quote on it. Of course. I am a hardcore Shah Rukh Khan fan. So मैंने तो देखनी थी वो. So of course Ishan's given a very erudite and a film study wala approach. I watched it as a normal cinegoer, and the fact that I most enjoyed about it was that one, I got to know the story behind my namesake film, or my eponymous film Chandni, and how that film came into being, and the struggle that Yash Raj had to have endured to make that iconic film. But then Shah Rukh Khan's journey, like you said, like him wanting to be an action hero, and this is a spoiler alert, he wanted to be an action hero, and the man who convinced him that he should do a romantic film, and of course we all are witness to the history that Shah Rukh Khan as a romantic hero became, was Aditya Chopra. So the two things that I enjoyed a lot was Shah Rukh Khan's rise and the behind the scenes of DDLJ, and the genius of Aditya Chopra. It was truly a pleasure to hear him talk about movies. And वो movies कोई entertainment को वैसे नहीं देख रहे जैसे आम लोग देखते हैं. He has this entire psyche and sort of a science going on in his head when he makes films or when he invests in films as a producer. वो देखना एक बहुत बड़ा pleasure था, because Aditya Chopra doesn't come on screen or in front of the camera that much. So watch it for Aditya Chopra, watch it for Shah Rukh Khan, for people who are diehard fans like me, and of course watch it for Yash Raj. Very, very nice, extremely fun. And it's not trying to teach you anything, but you do learn a lot about filmmaking nonetheless. बिल्कुल, आदित्य चोपड़ा को मैंने पहली बार देखा स्क्रीन पे, कभी वो शक्ल नहीं दिखाते हैं, and he never comes on any of these award shows also. And the fact that they said that Aditya Chopra used to beat Hrithik Roshan in dance competitions that they used to have in their parties or something, that was quite unheard of, beating Hrithik Roshan of all the people in dance competitions. ऐसे वाले snippets बहुत हैं.
सृष्टि अनुरोध जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। इस रिव्यू के बाद जरूर देखेंगे। हाँ बिल्कुल देखो, और उसमें काफी अच्छा है, मुझे तो बड़ा पसंद आया। मैं चाहता हूँ और भी फिल्म मेकर्स के बारे में, प्रोडक्शन हाउसेस के बारे में बने। करण जौहर का भी उसमें थोड़ा बहुत क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन है उस डॉक्यूमेंट्री में। रानी मुखर्जी भी थोड़ा सा दिखी है। शाहरुख खान का इंटरव्यू नहीं है उसमें, इतना ज्यादा नहीं है, जरा सा है बिल्कुल। बट अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू है। हाँ। और विजय कृष्ण आचार्य का इंटरव्यू है। नेपोटिज्म की बात है, दैट नेपोटिज्म पर बात हुई है, क्योंकि डिबेटेड डिस्कस आदित्य टॉपिक। चोपड़ा उनके नेपो किड में ही आएंगे, बट जैसे कि उदय चोपड़ा ने बोला कि दिस नथिंग कॉल्ड नेपोटिज्म, कुछ हो तो नहीं सकता। जावेद अख्तर भी वही कहते हैं कि अगर अंबानी का बेटा है तो वो अंबानी अपना सब कुछ अपने बेटे को देगा, वो मुझे या आपको नहीं देगा। तो जावेद अख्तर का भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक है नेपोटिज्म पे, बट दे proved their worth. Aditya Chopra, Uday Chopra also, मतलब he as a comedy actor might have succeeded, but he did not want to become a comedian. He wanted to become an action hero, which he couldn't. Though he did some leading roles कुछ फिल्मों में। मैंने सिर्फ मोहब्बतें में देखा था उदय को, और मैंने धूम सीरीज में देखा था उदय चोपड़ा को। बाकी और किसी फिल्म में मैंने नहीं देखा है। और ऐसी कोई डिफाइनिंग फिल्म हमारी जनरेशन के लिए क्या है? डीडीएलजे वाज वेल बिफोर वी वर बोर्न, सो इफ आदित्य चोपड़ा, नॉट उदय चोपड़ा, नॉट आदित्य चोपड़ा, उदय चोपड़ा आदित्य ब्रदर। नहीं, आई एम सेइंग व्हिच इज वन फिल्म दैट वी वुड से इज अ डिफाइनिंग फिल्म फॉर आवर जनरेशन। दिस इज डीडीएलजे फॉर द वंस हु फॉर द जेन जी, सो मिलेनियल्स के लिए, फॉर जेन जी हमारी जनरेशन के लिए कोई फिल्म पर्सनल फेवरेट, आई थिंक जब भी मेट होगी। हाँ, जब भी मैं उनके लिए जो बहुत रोमांटिसाइज करते हैं जिंदगी को, आई डू नॉट रियली लाइक रोमांटिसाइजेशन। वो रील वाला इंस्टाग्राम रील वाले से मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाता लोगों से, क्योंकि दे रियली रोमांटिसाइज दिल्ली, रोमांटिसाइज एवरीथिंग। उनको गीत बड़ी पसंद है, विच इज यू नो करीना कपूर रोल जब भी मेट। मैं तो बहुत, आई एम लाइक शाहिद कपूर ऑफ जब भी मेट, अर्ली शाहिद कपूर ऑफ जब भी मेट, वेरी सीरियस, वेरी डिप्रेसिंग। लेकिन आई डोंट थिंक सो, तुम ऐसे ही बोल रहे हो, फॉर मी मेरे मजाक कर लेते हो तुम। लेकिन डिफाइनिंग फिल्म अगर हमारे जनरेशन की देखें तो गैंग ऑफ वासेपुर, अनुराग कश्यप की गैंग ऑफ वासेपुर कुड बी वन डिफाइनिंग फिल्म दैट आई थिंक a lot of Gen Z relate to because of the language, because of the grammar. At least इस एरिया के जो नॉर्दर्न बेल्ट है उसमें तो गैंग ऑफ वासेपुर से लोग आई थिंक कनेक्ट करते होंगे। लेकिन उसमें क्योंकि रोमांस भी है, एक्शन भी है, कॉमेडी भी है, सब कुछ है, थोड़ा 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 थोड़ा। मैंने नहीं देखी हुई, किसी ने देखी है यहाँ पे? या आई हैव मैंने देखा है मैंने बट देखी नहीं, बट आई हैव सम फ्रेंड्स जो उसको काफी कोट करते रहते हैं। तारीफ हाँ, बहुत सुनी है सीरियस उसकी। बहुत मीम मेरे बने लिए हैं तो उसके। अभी भी एक ही मूवी है, थ्री इडियट, जिसको मैं कभी भी देख सकती हूँ। तो नाइस। वो एक मूवी जो हाँ, थ्री हमारे इडियट टाइम भी का है। मैं बहुत। सेम। अच्छा, हेरा हम्म, फेरी, और फिर हेरा फेरी मुझे लगता है डिफाइनिंग होनी चाहिए। राइट, हेरा फेरी सबने देखी और कितनी बार या देखी है। ये वो तो तो मैंने आजकल भी मेरी देखी। फेवरेट हेरा बनी फेरी हुई 2 भी आ रही है ना, आई गेस। हेरा फेरी 3 आ रही है। है। हाँ, 3। हाँ फिर हेरा फेरी थी जो कि उन्होंने बनाई थी, जो उसके राइटर थे, ही अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे अ फ्यू इयर्स बैक। क्या नाम था उनका? आई डोंट नो। पहली तो प्रियदर्शन ने बनाई थी हेरा फेरी, देन द राइटर ऑफ द फिल्म डायरेक्टेड फिर हेरा फेरी, और अभी पता नहीं, अभी शायद अनीस बाज़मी या कौन बना रहे हैं, आई डोंट नो। बट अभी वो मजा नहीं होगा, आई डाउट, क्योंकि वो जो मजा उधर क्रिएट हो गया था विद द काइंड ऑफ स्टोरी लाइन, डायलॉग्स, 40 लाख, वो पूरा एक कल्ट है। इवन कॉस्ट्यूम, उन लोगों का जो स्टैंडर्ड एक कपड़ों का वो था, मेरे दिमाग में अभी भी वो पिंक कलर की फ्लैट शर्ट वाला अक्षय कुमार घूमते रहते पूरे टाइम। तो वो मीम्स भी में एक, काफी चला था। हाँ हाँ हाँ, वो ऐसे करके स्पेक्स वाला पोज। बाबू मैंने एक भैया का चीज स्टाइल है। मैंने एक चीज देखी कि सीक्वल्स बहुत रेयरली क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग रहते हैं, दे जस्ट हम्म डाउनग्रेड स्लोली स्लोली।
आई हाँ थिंक अभी मैंने देखा है। तन्नू वेड्स मनु रिटर्न्स एक सीक्वल है जो मुझे लगता है आउटडिड द फर्स्ट फिल्म मेरे लिए। इवन हेरा फेरी का, फिर हेरा फेरी इज मच Funnier. रिच इन कॉमेडी, हाँ, रिच इन डायलॉग्स। तो ये फिल्म है। हाँ, तनु एंड मन्नू का भी बहुत अच्छा है। पार्ट 2 विद दीपक डोबरियाल, और उसको मुझे हार्ट अटैक का सीन है लेक्चर देते देते। ओ माय गॉड, वो ब्रिलियंट। and बॉलीवुड के सीक्वेंस से टॉलीवुड का सीक्वेंस इज मोर गुड। उनके टॉलीवुड का जो सीक्वेंस आता है दैट वाज रियली गुड, वो काफी बाहुबली इंटरेस्टिंग होता है। बाहुबली सेकंड पार्ट आई वॉच ट्वाइस। केजीएफ सेकंड पार्ट वाज अच्छा, मैंने साउथ के मैंने सॉरी मैंने किसी भाषा में, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, मलयालम, कोई भी सेकंड पार्ट नहीं देखी है। मैंने फर्स्ट पार्ट बहुत सबके देखे हैं। बाहुबली का भी फर्स्ट पार्ट देखा था। आई केजीएफ फाउंड मैंने सेकंड सेकंड पार्ट देखा है, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा। कंटारा का मैं सेकंड पार्ट देखूंगा, क्योंकि कंटारा मुझे पार्ट 1 बहुत अच्छी लगी। कंटारा आरआर। लाइक आई थिंक उसकी हाँ, सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी है, मैंने कंटारा सुना। की ना। हाँ, मैंने काफी सुना हम्म उसके बारे में। ऋषभ शेट्टी जो एक्टर है जिसने वो प्ले हम्म। किया है, वही डायरेक्टर भी है। मुझे बाद में पता चला ही इज अ ब्रिलियंट पर्सन। उसकी एक्टिंग कितना अच्छी, नेचुरल एक्टिंग है। लेकिन आरआरआर पे इतना डिस्कशन हो रहा है, वो सब हो रहा है। आई डिडंट फाइंड आरआरआर दैट अपीलिंग एट ऑल। आई डोंट नो, आई थिंक इट्स अ माय फॉल्ट, नॉट द पीपल हु लाइक आरआरआर। इफ यू लाइक आरआरआर, कांग्रेचुलेशन, इट हैज आई गॉट हैवंट वॉच्ड इट गोल्डन येट। ग्लोब, और मैं उसको देखूंगा ऑस्कर कभी के लिए इसके भी बाद। नॉमिनेट किया है। आई थिंक इसके इट विल आगे गेट। में डिस्क्लेमर डाल देना चाहिए, ऑल व्यूज आर पर्सनल। हाँ, पर्सनल आई रियली डोंट फाइंड। आई लाइक द सॉन्ग नाटू नाटू। आई लाइक दैट सॉन्ग बिकॉज उसका वाइब बड़ा अच्छा है, म्यूजिक अच्छा बहुत है। इवन आई लाइक द म्यूजिक परहैप्स the, a little more than the genius of the film. music director. He was a he's a forgotten gem of cinema। जो जिन्होंने म्यूजिक दिया है, उन्होंने कई सारे पुराने गानों के भी म्यूजिक दिए थे, जो मुझे बाद में पता चली कि अच्छा इन्होंने ये सारे गानों के भी म्यूजिक दिए थे। ही इज ऑलमोस्ट लाइक ए आर रहमान। ही इज दैट सेम जीनियस लेवल म्यूजिक में। लेकिन हम उनको जानते नहीं, क्योंकि एक तो वो हिंदी सिनेमा में उन्होंने कम काम किया है, तो हमारी लिमिटेशन हो जाती है वहाँ। बट अच्छा, बहुत अच्छा साइन है कि तेलुगु फिल्म्स और तेलुगु ही, नॉट इवन तमिल, इवन तेलुगु फिल्म्स अब पैन इंडियन फिल्म्स बन रही हैं। आरआरआर और ये सब, दे एवरीबडी रिलेट्स टू दीज फिल्म्स, चाहे वो कश्मीर हो या पंजाब से हो या दिल्ली से हो, यूपी से हो। एवरीबडी नो अबाउट आरआरआर और कंतारा। इवन मलयालम फिल्म्स फॉर दैट मैटर, अगर आप लोग देखना पसंद करते हैं, मलयालम फिल्म्स आर रियली वेरी गुड, वेरी सोशल इशू बेस्ड, इशू सेंट्रिक फिल्म्स, women सेंट्रिक फिल्म्स, वेरी प्रोग्रेसिव सिनेमा आज जो बन रहा है। अंजलि मेनन एंड अदर्स। इफ आई रिमेम्बर इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, अभी रिसेंटली आई थिंक लास्ट ईयर या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर एक फेमस मलयाली फिल्म इंडस्ट्री के कोई है पर्सनालिटी, ही डाइड। वाज he was quite famous, he is famous, I'm forgetting his name, the long hair something. Okay, we will सॉरी, see. आई डोंट नो, आर क्योंकि बैड, हम अगली बारी थोड़ा और बेटर तैयारी करके आएंगे। हाँ, मुझे नाम जरूर। मुझे याद नहीं रहते। मैंने आई वॉज आस्क्ड टू डिलीवर अ टेड टॉक लास्ट मंथ, उसमें भी मैं नाम भूल गया था। सो नाम और डेट मैंने उसमें भी कहा है, प्लीज डोंट रिमेम्बर नेम्स एंड डेट्स, दे आर सेकेंडरी, रिमेम्बर द रीजंस। तो उनकी फिल्में याद रखें, जो भी आप जिनकी बात कर रहे हैं उनकी फिल्में याद रखनी चाहिए। अभी नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर बोल के गए थे। Oh, And I that's read true. somewhere it's a myth, or I don't know, it's an interesting myth कि Shakespeare was actually a pseudonym used by a women writer. So Shakespeare is actually a pseudonym, it's not a real name. That's what it's a historical myth. There's no basis for this fact. तो बट इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी नंदलेस। बड़ा मजा आएगा सोच के कि ऐसा कैसे विक्टोरियन एरा में कैसा इंग्लैंड रहा होगा या यूरोप रहा होगा कि women's were not allowed to use their name and use a masculine name to make a mark in literature. आई थिंक दैट इज ट्रू फॉर द फर्स्ट बुक दैट जेन ऑस्टन आल्सो रेड। उनमें उसका उनका सूडोनेम यूज हुआ था, उनका नाम नहीं था।
The book Hmm. that she first, but I think Sense and Sensibility, if I'm not wrong. And of Yes. course, she becomes this sort of this iconic. अब Women's Day है, तो I think Jane Austen की books का नाम तो आएगा ही आएगा. She's supposed to be this landmark when it comes to women writing in Victorian era and the bygone era. या इवन हिंदुस्तान में हमारे बड़े अच्छे राइटर्स हैं. I don't want to call them women writers, female writers, because writer is a writer. We really I don't agree. see. And Sai Paranjpe, she's one of the most brilliant filmmakers जिन्होंने कई सारी फिल्में बनाई हैं. कथा उनमें से एक फिल्म है. तो और चश्मे बद्दूर एक फिल्म है उनकी. वो कहती हैं कि प्लीज नेवर कॉल मी अ फीमेल फिल्म मेकर और वुमेन फिल्म मेकर. आई एम अ फिल्म मेकर. दैट्स माय आइडेंटिटी. आई डोंट थिंक फीमेल फिल्म मेकर क्या क्या कुछ बड़ा उपकार कर रहे हैं मेरे पर. बट देयर आर मेनी राइटर्स दैट वी रियली डोंट एक्नॉलेज. लाइक हिंदी में आजकल बहुत अच्छा लिख रही है सुजाता. शी हैज वर्कड ऑन स्त्री विमर्श पर उनका बहुत काम है. और नेताजी और महात्मा और नेताजी पर, गांधी और सुभाष पर उनका बहुत अच्छी किताब मैंने पढ़ी थी. अभी उनकी शायद पंडिता रमाबाई पे एक किताब आई है. जस्ट लॉन्च्ड एट बुक फेयर. सुजाता को आप लोग जरूर पढ़िए. कृष्णा सोबती को आप जरूर पढ़िए. उनका जिंदगी नामा जो उनकी किताब है. कृष्णा सोबती को लोग भूल गए हैं आजकल. अनामिका है, ममता कालिया है. ये हिंदी के मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ता हूँ. मेरी मातृभाषा हिंदी है तो मैं बाकी भाषाओं के नहीं जानता. लेकिन कमला दास, मलयालम में अगर आप देखें तो कमला दास की किताब हमने सबने पढ़ी होगी. अंग्रेजी में एनसीईआरटी का पार्ट था कमला दास का. सुधा मूर्ति इज अनदर नेम. बट I think अगर films की बात करें तो popular now, even though we are मतलब not wanting to use the word female, but एक popular writer director, I think Gauri Shinde is known Gauri for is the brilliant. films. She's my favorite. English के बाद she became Exactly. my favorite. और उन्होंने फिर डियर जिंदगी बनाई. बड़ी शानदार Yeah. फिल्म. I like the way जिस तरह वो discuss करती हैं topics, but she doesn't give too much importance कि oh my god बहुत बुरा हो रहा है society के साथ. बहुत subtly topics के साथ deal करा जाता है, themes के साथ deal किया जाता है, चाहे वो mental illness हो या वो English language या language complex हो as a society. So I like that about her. Even Kamala Bhasin, she was excellent. Kamala Bhasin, of course. Yeah. And Uma Chakravarti, our most favorite, one of our most favorite scholars, and Karwaan jury member. Uma Chakravarti was very closely related to the feminist movement in India. She is often called the mother of the feminist movement in India. So we are very fortunate that we associate ourselves with Uma Chakravarti, and we are fortunate to have her guidance, mentorship regularly for Karwaan works, and she is very closely associated with almost all our activities. इसके अलावा this filmmaker who made Kareeb Kareeb Single, who is that? And the actress Parvati, जो Kareeb Kareeb Single में पार्वती है, she is a brilliant actress. The film ही बहुत मजेदार थी वो. I really like that film. Kareeb Kareeb Single. Some Chandra. She is the daughter of Kamini Chandra. But Anupama Chopra's sister. See, I get all the names of their family members, but not her name. Very bad with names. I'm really sorry if she's watching this live right now. I'm really sorry. Or she'll watch the live later. And that reminds us, let us know the topic. Tanuja Chandra. I Tanuja. I'm really sorry, Tanuja, if you're watching this. But very bad with names. So yeah, and please let us know the topics that we should discuss. If you would like to see more of these conversations, and what topics should we be discussing so that we're better prepared with names at least. Send us on WhatsApp or Instagram, or email us on karwaanheritage@gmail.com. It's almost 8:45 and I think it's time to wrap today's conversation. Because it's Holi. I'm very sure people are busy making chia, namak pare, or whatever snacks and things that you make. Have thandai tomorrow with bhang or whatever you wish to have, because this is the time that you can enjoy bhang. But always take this in good proportion so that you don't face the repercussions of getting intoxicated with bhang. So please be very careful. And many
best wishes and whatever good wishes for International Women's Day. Every day is a day for everybody. We really don't have to tag a day specifically for purpose, but happy International Women's Day to all of us, to all women in our lives, and whoever is listening to us right now or later. So very happy Holi, and I hope आप सभी रंग से खेलें, दिलों से ना खेलें. Happy Holi. Bye Anurod. Thank you Anurod, Shrishti, Chandni for joining. और हम फिर से करते हैं बहुत जल्दी, फिर से हम वापस ये करेंगे. I think I'll be in Baroda then, so I'll have a different background. Anurod might be in Aligarh, तो another different background, लेकिन चांदनी और सृष्टि का बैकग्राउंड यही रहेगा, और इसी क्या कहते हैं उसको स्टेबिलिटी के साथ हम वापस आएंगे. Thank you so much Thank you everybody. everyone. Happy Holi. Good night. Thank you, everybody. was Happy good to